Today we are going to study about theory of production. So whenever we study about demand, we think as if we are consumers, and when we think about supply or when we think about production, we have to consider that we are suppliers or we are the producers, right? We are entrepreneurs. So let's imagine we are running a firm, right? एक छोटा सा कंपनी है हमारा जो हम रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं. Let's assume we are producing shirts in this particular firm, right? So to produce shirts हमको बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, right? So जो चीज़ें हमको to produce shirts लगने वाली है, we will call that commodities. We will call those commodities as factors of production. राइट. सो ये शॉर्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या लगेगा? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल लगेगा, राइट. एक प्लेस लगेगा, एक लैंड लगेगा जिसको हम हायर करेंगे. फिर हमको ये शॉर्ट्स स्टिच करने के लिए सुइंग मशीन्स लगने वाले हैं. सेम टाइम हमको थ्रेड्स लगेंगे, बटन्स लगेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल लगने वाला है. अलॉन्ग विद दैट हमको लेबर लगने वाला है. लेबर दैट इज स्टिचिंग करने के लिए टेलर लगेंगे हमको, कोई ना कोई मैनेजर लगेगा, राइट. तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो फैक्टर्स है जो हमको प्रोडक्शन के लिए लगते हैं, वी कॉल देम एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन जनरल वे वी से देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर, राइट. तो हमको ये 4 चीज़ें लगती है टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि एनी प्रोड्यूसर, आपका ये जो कंपनी है वहाँ पे यू विल इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट. अब बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा एंड फाइनली यू विल गेट सम आउटपुट. आप जितना इनपुट करोगे उसी के प्रपोर्शन में आपको आउटपुट मिलने वाला है, राइट. आपका जितना इनपुट है उसके प्रपोर्शन में आपको आउटपुट मिलने वाला है. तो हियर द क्वेश्चन इज, आप कितना इनपुट करोगे तो आपको कितना आउटपुट मिलेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सिंपल चीज़ है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज हमको टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना इनपुट करना चाहिए तो उसको प्रॉफिटेबल आउटपुट मिलेगा. अगेन आई से, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर कितना इनपुट करना चाहिए ताकि उसको एक प्रॉफिटेबल डिसेंट आउटपुट मिलेगा, राइट. ये हमको कब आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का? व्हेन वी स्टडी प्रोडक्शन फंक्शन, राइट. वी हैव स्टडीड डिमांड फंक्शन, राइट. हमने देखा डिमांड किस तरह से मूव होता है, किस तरह से रिएक्ट करता है. डिमांड के वेरियस डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब क्या है. दिस इज डिमांड फंक्शन. हाउ विल पीपल डिमांड. Here what are we going to study is, we are going to consider how will producer produce any commodity. To come with the answer, we have to study production function, right. So okay, सबसे पहले देखिए, we'll start with theory of production. To understand production function, we need to start with theory of production. The theory of production is concerned with the problem of combining various inputs to produce certain level of output. It analyzes the physical relationship between inputs and outputs. Simple चीज़ है, देखिए हमने यही अभी कहा था. To produce one shirt, we are going to need certain amount of inputs: raw material, land, tailor, sewing machines, cloth, thread, buttons, राइट. ये आपका इनपुट है. ये इनपुट आपकी फॉर्म में जाएगा, देन योर फॉर्म विल स्टार्ट वर्किंग एंड अल्टीमेटली आपको एक आउटपुट मिलने वाला है, राइट. सो व्हाट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन? इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो फार हमने जो रिलेशनशिप स्टडी किए थे, सो फार वट एवर रिलेशनशिप्स हमने स्टडी किए थे, हमने देखा था कि प्राइस है और एक डिमांड है. Price और demand का relationship is not very complex, but relationship between input and output is extremely complex. ये continuously change होता है. हर एक level of production पे,
हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विल वेरी, विल चेंज, राइट? सो the entrepreneur or the producer has to be very intelligent, very smart to understand ki which kind of relationship you want to have in your firm, right? Exactly कौन से function तक आपको काम करना है, कितना आपको प्रोड्यूस करना है. Why are we studying basically production function? Simple है, to give answer to the producer how much to produce. हम प्रोड्यूसर को आंसर करने वाले हैं. Why are we studying this theory of production or production function? Because कोई भी प्रोड्यूसर अगर आपके पास आता है, या tomorrow if you open your own firm with XYZ amount of input, you can produce ABC amount of output, right? Input से आपने कुछ output produce किया, बट कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए ये आंसर आपको प्रोडक्शन फंक्शन देगा. कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए विच विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म, राइट? वैसे तो जितना आउटपुट है उतना सारा यूज करके वी कैन मैक्सिमम लेवल तक वी कैन प्रोड्यूस, बट इज इट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म और नो? दैट इज द क्वेश्चन. सो प्रोडक्शन फंक्शन or theory of production will answer very crucial question, that is how much one producer should produce which will be profitable for himself, for his firm, correct? So now let's assume you have 100 rupees, right? आपके पास, हमारे पास कितने rupees है as a your owner of this particular firm, and you have 100 rupees with you. That is your capital. They call this 100 rupees as what? Your capital. Now ये 100 rupees आप ये particular firm में input करोगे. Are you understanding? आप input कर रहे हो capital. ये कैपिटल से यू विल बाय रेस्ट ऑफ दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कैपिटल से आप बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करोगे या बाय करोगे. जैसे आपने सुइंग मशीन खरीदा, राइट? जैसे आपने क्लॉथ खरीदा, बटन खरीदे, थ्रेड्स खरीदे, एक लैंड हायर किया, एक लैंड जो है एक छोटा सा ऑफिस आपने रेंट पे लिया, आपने कुछ टेलर्स को हायर किया, ह्यूमन रिसोर्स टेलर्स को आपने हायर किया, जिनसे ये क्या करने वाले, ये सारे आपके इनपुट्स हैं जो आपने आपके 100 रुपीज, दिस वाज योर बेसिक इनिशियल कैपिटल, ये सारा इनिशियल कैपिटल आपने इनपुट करके रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने इधर बाय किया या हायर किया. ये सारों को आपने अपने फर्म में काम करने को बोला. चलिए सब मिलके शर्ट्स प्रोड्यूस करना. ये सारे फैक्टर, जितना आपके पास लिमिटेड पैसा था, ओनली 100 रुपीज यू हैड, तो ये लिमिटेड पैसे से, लिमिटेड कैपिटल से योर फर्म कुड प्रोड्यूस 10 शर्ट्स. आपके फर्म ने कितने शर्ट्स प्रोड्यूस किए? 10 शर्ट्स प्रोड्यूस किए, राइट? तो मुझे बताइए ऑन एन एवरेज एक शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लगा? यू हैड 100 रुपीज. इस 100 रुपीज से आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय किया एंड हायर किया, फाइन. अभी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने फर्म में एम्प्लॉय किया, बोला कि चलिए प्रोडक्शन कीजिए शर्ट्स का. ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने आपको 10 शर्ट्स बना के दी. तो एक शर्ट बनाने का कॉस्ट कितना था? एक शर्ट कितने रुपीज में बना? एक शर्ट बनाने के लिए आपको यहाँ लगा है ₹10, राइट? सो ₹10 is cost of production of one shirt. See what I'm saying? ₹10 is cost of production of one shirt, correct? So same way आप ये जो शर्ट आपने बनाया है, अभी आप मार्केट में सेल करेंगे. Here when you're selling the shirt, you will try to study cost function, yes, जिससे आपको प्रॉफिट कैसा. बट उसके पहले का जो स्टेप है दैट इज प्रोडक्शन, हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो आप 10 प्रोड्यूस कर सकते हो, बट कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? यस, मे बी प्रोडक्शन फंक्शन विल टेल यू आपको नहीं 8 ही प्रोड्यूस करना चाहिए, या आपको कुछ ना कुछ करके 11 प्रोड्यूस करना चाहिए.
और थोड़ा सा कैपिटल इनपुट करके आपको 11 प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो है हाउ मच शुड यू प्रोड्यूस का आंसर आपको देगा प्रोडक्शन फंक्शन। So production function tells you the relationship between your input and output. Next, the concept of production. The productive activity may involve any of the following forms, namely increase in the quantity of goods and change in the form of goods. Right? So what do you mean by production? The concept of production वो कह रहे हैं, मतलब production का मतलब क्या है? See, it either can be increase in the quantity of good or change in the form of good. Right? देखिए human being cannot create anything. We can't even create energy. ऐसा आपने साइंस में पढ़ा होगा. आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट? सो सेम वे वी कैनॉट क्रिएट एनीथिंग ऑन आवर ओन. जो भी आपको नेचर में, जो भी सराउंडिंग में अवेलेबल है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज either increase in the quantity of good or change in the form of good. That is called as production. So using all these inputs, what are you doing? Either you are increasing the quantity of the good or you are changing the form of the good. Right? That is known as production. Inputs are the resources used in the production of goods and services. Right? Inputs may be classified into labor, capital, land, or natural resources and entrepreneur. So basically inputs are nothing but factors of production. Inputs are nothing but factors of production. There are mainly 4 factors of production widely जिनको हमने divide किया हुआ है. That is land, labor, capital, land को आप natural resources भी कह सकते हैं, and finally entrepreneur. ये 4 जब factors of production साथ में आएंगे, we will call them as inputs. Right? ये inputs को आप अपने फॉर्म में डालेंगे. फॉर्म में आप एग्जैक्टली क्या करें? यू आर ईदर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड. एक क्लॉथ को आपने कट करके शर्ट बनाया, आपने फॉर्म चेंज किया है, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, राइट? सो now let's see what is production function. अभी हमने देखा what are inputs, what is output. हमने देखा inputs में, inputs को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम लोग? Inputs are nothing but factors of production, right? ये inputs आपने लिए और कुछ output बनाए. Now this is called as production. Production में आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं? Either you are increasing, I'm stressing on this, either you are increasing the quantity of particular good or you are changing the form of a good. This process, inputs either change the quantity or increase the quantity or change the form, और जो आपको return में मिलेगा, that is your output, right? This whole process is production process, right? Now see what is production function. Production function can be an equation, table or graph showing the maximum amount of a commodity that a firm can produce from a given set of inputs during period of time. सबसे पहले during period of time. Let's start from the end. सबसे पहले क्या कहा है? During period of time. That is, the production function has major time constraint. What we are saying, the theory of production function has major time constraint. Why do we have major time constraint? Simple reason here is, right now whatever technology we are using, that technology has constraints. Constraints means limitations, right? आज हम एक old, let's consider an example where we used to use handlooms to produce cloth. Cloth बनाने के लिए हम लोग handloom use करते थे. That's old technology. That's a lengthier technology. Time बहुत ज़्यादा लगता था. Productivity, that is your output was lesser, right? So तब का, when we had handlooms, तब का production function अगर हम आज employ करें, where we are using machine looms,
Will your equation, will your graph, will your table will be correct? Will it give right answers? It will not. So, सबसे पहले, why do we have used this period of time? Simple reason is because of technology. Everyone knows for production we need technology. Very essential, very crucial, right? And this technology is changing continuously. So today's technology के हिसाब से हमने जो equations, graph, diagrams और सब tables बनाए, ये for better technology this is irrelevant, right? So सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, देखिए production function में has time constraint. I will also call this as technology constraint. और given a technology मतलब अभी का जो technology है, for that technology only my production function will be like this. अगर technology change होता है then my production function will also change. For today's time जो मैंने equation, जो मैंने conclusion निकाला है वो correct है. अगर time बदलता है, technology बदलता है, then my conclusion will be different. Right? So during period of time we know what is it. So simple चीज़ है, it can be an equation graph showing maximum amount. हमारा जो input है वो input हम इस form में employ करके maximum कितना output produce कर सकते हैं given the state of today's technology, that is known as production function. Again I am repeating, हमारा जो inputs है, this inputs can also be called as factors of production. ये factors of production हम employ करेंगे हमारी firm में जहाँ पे हम shirts produce कर रहे हैं. I am taking an example of producing shirts. You can imagine anything. Or for each and everything which you are using, which are produced in firms, so everything this theory will be true. This theory will be valid. So we bought some inputs और some factors of production जिनको हमने हमारी कंपनी में फर्म में एम्प्लॉय किया, और ये फर्म में आपने जो एम्प्लॉय किया है इसका पूरा प्रॉपर प्रोडक्शन हो गया. इधर चेंज ऑफ फॉर्म हुआ है या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, और हमको एक आउटपुट मिला है, राइट? सो basically what is production function? Production function is telling you the relationship between inputs and outputs, that is production function given the state of today's technology. मैंने today I studied about one firm, ये inputs है, इतना इतना outputs produce होना चाहिए. This may not be true for tomorrow. Why? Because tomorrow technology will change. आज की टेक्नोलॉजी के लिए दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज ट्रू, विच मे नॉट बी ट्रू फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी. सो रिमेंबर, प्रोडक्शन फंक्शन हैज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, टाइम कंस्ट्रेंट्स. हेंस वी से T, which stands for technology, is constant. In mathematical terms or in equation terms, अगर आपको some certain thing is constant कहना है तो हम कैसे करेंगे? T, उसके ऊपर एक लाइन करेंगे, that is known as T bar. Right? That is T is not changing at all. T is constant. And because T is constant, we are not considering this while studying production function. Production function जब आप study करेंगे, you assume कि ये constant है, this is not going to move, so you are not using this at all. आप इसको constant करके side में रखें. Right? So that is technology. Next देखिए, concept of production function describes the ways in which the factors of production are combined by a firm to produce different levels of output. From the lecture जब से हमने start किया है studying about production function, this is what I have been telling. What is production function? Factors of production को firm में employ किया और कुछ ना कुछ output मिला, that is production function. बीच में study क्या करना है? Study करना है कितना इनपुट से कितना आउटपुट मिलेगा. As I said, this input or output का relationship is complex, right? Sometimes it is constant, sometimes it is decreasing, sometimes it is increasing. We will study that as we go ahead, right? Next.
Now see production function. Production function is determined by given state of technology. When the technology improves, the production function changes. I have already explained this. Technology is considered to be constant in while studying production function. हमने assume किया है technology is not changing, and then only we are studying production function. Right? Technology change होगा, you will have to work out your equation again. Inputs वापस consider करना पड़ेगा, outputs वापस consider करना पड़ेगा, and then only we can come up with the new production function. See, for an example, हम we were producing shirts, right? तो हमारे पास पहले sewing machine जो था ना वो पुराने ज़माने का था. तो ये sewing machine पे एक दिन पे एक ही शर्ट प्रोड्यूस हो रहा था, एक ही शर्ट स्टिच करके हो रहा था. वन स्विंग मशीन वाज प्रोड्यूसिंग ओनली वन शर्ट. अभी हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया है, राइट? सो सिंपल क्या हो रहा था, अर्लियर एग्जांपल, इनपुट्स डाला, वन स्विंग मशीन वाज प्रोड्यूसिंग वन शर्ट. सो यू नो योर प्रोडक्शन फंक्शन. अभी हमने नया टेक्नोलॉजी यूज किया है. इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी वी बॉट न्यू स्विंग मशीन, better quality sewing machine, faster new technology, high एकदम high fund sewing machines खरीदे. These sewing machines are producing 2 shirts per day. ये जो नया sewing machine है वो 2 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में. तो आपने जो earlier production function workout किया था, will that be useful now? No, that will be outdated, right? That is the importance of technology here. As usually टेक्नोलॉजी और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या है, देखिए. जैसा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, योर आउटपुट, योर प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज. जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज. मीनिंग टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. टेक्नोलॉजी एंड आउटपुट, दे एंजॉय पॉजिटिव रिलेशनशिप. करेक्ट. सो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आज का टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा. टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, नया प्रोडक्शन फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा. द प्रोडक्शन फंक्शन, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटपुट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इनपुट्स. Now we need to study what do we mean by dependent and independent variable. So simple, let's consider an example of fashion, right? Any kind of fashion which comes in the सोसाइटी. सो ऋतिक रोशन कंसिडर कीजिए, उसने अपने नए फिल्म मूवी में एक सर्टेन टाइप का कुछ हेयर स्टाइल किया. क्या उसने वो हेयर स्टाइल सोसाइटी में जो या फिर मार्केट में जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं वो देख के किया? नहीं. ही क्रिएटेड हिज ओन फैशन, हिज ओन स्टाइल. उसका हेयर स्टाइल is not dependent on market's hairstyle. चलिए, so he is independent. ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल इज इंडिपेंडेंट, राइट? सो ही जैसे उसका मूवी रिलीज हो गया, ये हेयर स्टाइल जो है वो बहुत फेमस हो गया. अभी मार्केट में जितने भी आपको लड़के दिखते हैं, everyone will have हेयर स्टाइल लाइक ऋतिक रोशन. मतलब मार्केट का फैशन चेंज looking at ऋतिक रोशन. So your Hrithik Roshan is independent variable. His decisions, his hairstyle is not dependent on anyone. Whereas market का fashion, जितने भी हमारे सोसाइटी में लड़के हैं, उन सबका फैशन इज डिपेंडेंट ऑन ऋतिक रोशन. जैसे कि अभी विराट कोहली ने जो नया हेयर स्टाइल किया, यू विल सी एवरी किड वांट्स विराट कोहली वाला हेयर स्टाइल. सो योर विराट कोहली इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हिज डिसीजंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्केट. बट जो भी तुम्हारे स्कूल में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दे ऑल वांट विराट कोहली वाला हेयर स्टाइल. सो दे ऑल आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सेम वे व्हेन वी कंसीडर प्राइस एंड डिमांड, प्राइस वर्क्स ऑन इट्स ओन. प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करता. प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो खुद से जो चाहिए वो करेगा, इधर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, नॉट कंसिडरिंग व्हाट डिमांड इज डूइंग. बट व्हाट हैपेंस टू डिमांड? जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड विल चेंज. जैसे ही प्राइस रिड्यूस हो गया, डिमांड विल चेंज. डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, hence demand is a dependent variable. Correct? So there are two types of variable. When we study micro, what are we trying to study? We are studying microeconomics. We are studying small parts of economics.
वी आर नॉट स्टडिंग इकोनॉमी एज अ होल, बट यहाँ पे हम इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स की पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ हमको पढ़ना क्या है, अबाउट वन फर्म, जहाँ पे कुछ इनपुट्स है और कुछ आउटपुट्स है। इनपुट इज वन वेरिएबल, आउटपुट इज वन वेरिएबल। जैसे प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल्स हैं, वैसे इनपुट एक वेरिएबल है और आउटपुट एक वेरिएबल है। इन दोनों में से विच इज डिपेंडेंट एंड विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी से दैट इनपुट्स or factors of production are independent variable, they are ऋतिक रोशन, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, वो खुद से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर से किसको अफेक्ट होने वाला है, आउटपुट को अफेक्ट होने वाला है, पर आउटपुट से इनपुट्स को अफेक्ट नहीं होने वाला है। सो हियर इन दिस सिचुएशन इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, whereas output क्या है, dependent variable, that is output depends on input, output depends on your factors of production, output will depend on land, output will depend on labor, output will depend on capital, output will depend on entrepreneur, right। ये चारों मिलके as a group will affect output. So here we have just stated what do we mean by independent variables and dependent variables, and we come to the conclusion that inputs are independent variables whereas outputs are dependent variables, right। So यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए, in production function we try to study independent variables की वजह से dependent variables पे क्या affect हो रहा है। That is, in production function we try to study inputs के वजह से outputs पे क्या affect हो रहा है। Next देखिए, in a production function the dependent variable is the output and the independent variables are the inputs, right। Thus the production function can be expressed as Q, that stands for quantity, or that stands for output जो आपने produce किया है, right। So Q quantity supplied कहिए, output कहिए, fine, equals to function of N, L, K, E and P, right। The small letter F that stands for function of means output is function of input, means output depends on input. Your output is dependent variable, inputs क्या है, independent variable है। So output function किसका है, inputs का। inputs में जो भी changes होगा output पे affect करेगा। Let's see. Okay. Where we say quantity produced, Q stands for quantity produced, N is natural resources और लैंड का जो रेंट होता है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेबर, टेलर्स आपने जो हायर की है वो, उनको आपको जो सैलरी देना पड़ता है वो, कैपिटल, राइट, आपके पास खुद के पास कैपिटल होगा या आपने किसी बैंक से कैपिटल को बोरो किया होगा, राइट, आपने लोन लिया होगा, दैट कैपिटल। फाइनली यू हैव एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी। So your output depends on what? Output depends on natural resources, output depends on labor, output depends on capital, output depends on entrepreneur or the organizer, manager, and finally output depends on the technology, right? पर इतनी सारी चीजें साथ में पढ़ना is not possible in microeconomics. Here we are studying microeconomics where we can study maximum 2 or 3 variables, right? So what are we considering? हमने कहा natural resources, entrepreneur and technology is not changing. We are not considering natural resources, technology and entrepreneur, right? Here we are only, for any production function we only consider 1 labor and 2 capital, right? So see, only the inputs of labor and capital are considered as independent variables in the production function. The sample specification of the production function is, so बाकी सबको हमने बोला कि नहीं तुम constant रहो, you do not affect production function right now, right? What two things will only affect production function? One is labor
which is denoted by capital L, and 2 is capital, which is denoted by capital K, right? इसको C से नहीं करते कि obviously हम capital का spelling तो C से लिखते हैं, but एक तो capital C stands for consumption, and earlier as for old English we used to spell capital as KAPITL, राइट? इसलिए कैपिटल को कैपिटल के कहते हैं, और अब जब कैपिटल सी लिखोगे उसका मीनिंग होता है कंजम्पशन, योर पर्सनल कंजम्पशन. आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किए, 4 यूनिट्स कंज्यूम किए, दैट इज कंजम्पशन, राइट? रिमेंबर, कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर लेबर, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर कैपिटल. सो व्हाट इज योर फाइनल कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी, व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्शन फंक्शन? Q, that is output, is a function of labor and capital. Labor और capital are two independent variables, right? और ये दोनों affect किसको करेंगे? आपके output को. That is the meaning of this equation. चलिए next देखिए use of production function. It can be used to compute at the least cost factor combination for a given output or a maximum output combination for a given cost, deciding on the value of employing a variable factor in the production process. So use of production function. Use क्या है? क्यों पढ़ रहा है production function? For any firm, किसी भी फर्म के लिए प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरी क्रूशियल. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट. तो किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं वो, किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं? तो 2 वेज. किस तरह से? 1, लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब आपके जो इनपुट्स है, आप इनको इनपुट को इस तरह से यूज कीजिए कि सब कम से कम पैसा लगेगा टू प्रोड्यूस आउटपुट, कम से कम कॉस्ट लगेगा to produce output. One way. The other way is what? Maximum output combination for given cost. जितना भी आपके पास कॉस्ट है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये दो चीजें स्टडी करने के लिए आपको प्रोडक्शन फंक्शन की जरूरत है. मीनिंग, इन अदर वर्ड्स, given the resources, how will you use these resources in an optimum way to produce maximum output, right? In other words, I will say, how will you use your available resources? What 2 resources you have, labor and capital. How will you use these resources in an optimum way to see? I'm not saying minimum, nor I am saying maximum. I'm saying optimum way, right? To produce maximum profit, to produce maximum output. जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, राइट? सो ऑप्टिमम वे से ऑप्टिमम वे में आपको अपने इनपुट यूज करने हैं टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. दैट इज द यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. व्हेन यू स्टडी प्रोडक्शन फंक्शन आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी फर्म. किसी भी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फंक्शन. एट द सेम टाइम आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ. Okay. Now we will consider what do we mean by fixed inputs and what do we mean by variable inputs. Right? सबसे पहले देखते हैं fixed inputs किसको कहते हैं. Fixed input is defined as one whose quantity cannot be changed, right? Instantly in response to change in market conditions requiring an immediate change in output. In other words, or an easier example, we are producing shirts. To produce shirts, we have 2 inputs. One is capital and one is labor. Capital is nothing but machinery, right? So here, say we have 2 sewing machines and 4 labor. ये 2 sewing machines and 4 labor मिलके आपको 4 shirts produce कर रहे हैं, right?
कि अगेन 2 स्विंग मशीन्स और 4 लेबर मिलके आपको 4 शर्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अभी आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, ऑब्वियसली आउटपुट इंक्रीज करना है तो इनपुट भी इंक्रीज करना ही होगा, करेक्ट है। अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो इनपुट भी इंक्रीज करना ही होगा। तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मुझे आउटपुट इंक्रीज करना है, तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैन आई बाय वन मोर sewing machine? It will be very expensive. Instead of that, what will I do is I will employ one more labor. क्या करेंगे हम, और एक लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, और एक वन एक्स्ट्रा लेबर will increase your output, right? So here what do we mean by fixed input? सिंपल चीज है, ऐसा इनपुट जो इमीडिएटली चेंज नहीं किया जा सकता टू इंक्रीज द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिल्डिंग, मेजर कैपिटल इक्विपमेंट्स, मैनेजरियल पर्सन, राइट। सो भी कैपिटल इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, इसको ओवरनाइट फटाक से चेंज नहीं किया जा सकता। सो दीज इनपुट्स विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड इनपुट। Now, what is variable input? So, variable input is one whose quantity can be changed readily when market conditions suggest that an immediate change in output is beneficial for the producer. Example: raw material, labor, services. सिंपल चीज है। 2 स्विंग मशीन्स को आपको और थर्ड स्विंग मशीन खरीदना, स्विंग मशीन और एक थर्ड स्विंग मशीन खरीदना इज डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव है। But instead of that, what we will do is we will employ one more labor. So your labor is variable input. So you have 2 inputs, one is labor and one is capital. Labor मतलब people who are actually working, जैसे कि human resources, right? Managers होंगे या फिर skilled labor होंगे, unskilled labor होंगे। हमारे यहाँ के it is tailors, right? So 2 inputs you have, one is labor. The other one is capital. Capital is what? All the building you have or any heavy machinery that we have, right? Sewing machines है ना। So in these 2 inputs, one input is fixed and the other input is variable. Fixed input कौन सा है? Sewing machine. Capital is a fixed input whereas labor is variable input. तो हमने कहा था हमारे पास 2 इनपुट्स है, लेबर एंड कैपिटल, जिनके ऊपर योर डिमांड विल डिपेंड, योर आउटपुट विल डिपेंड ऑन लेबर एंड कैपिटल। अभी हम कह रहे हैं वी आर एडिंग वन मोर पॉइंट इन दिस, वी आर एडिंग वन मोर फीचर टू आवर इनपुट। व्हाट इज दिस फीचर? दैट लेबर इज अ वेरिएबल इनपुट whereas capital is a fixed input. Labor is a variable input and capital is a fixed input, right? Next, अभी देखिए हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के कौन से टाइप्स ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। पहले देखते हैं व्हाट इज फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। पहले देखते हैं व्हाट इज फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन। Fixed proportion production function is one in which the technology requires a fixed combination of inputs, say capital and labor, to produce given level of output. Right? There is no possibility of substitution between factors of production. Right? The fixed inputs and fixed production function is 2 different things. Fixed सिर्फ नाम है, पर एक क्या था, fixed input था, ये क्या है, fixed production function है. What do we mean by production function? It means to produce one shirt, I require one sewing machine and 2 tailors. That is to produce one shirt, produce one unit of output, we require 1 unit of capital, that is sewing machine, and 2 units of labor, that is tailors, right? और कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है टू प्रोड्यूस वन शर्ट। ना आप स्विंग मशीन निकाल सकते हो, सिर्फ लेबर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या शर्ट्स? नहीं,
राइट ना। आप लेबर को निकाल सकते हो, सिर्फ सुइंग मशीन शर्ट प्रोड्यूस करेगा नहीं। दिस कॉम्बिनेशन इज फिक्स्ड। टू प्रोड्यूस वन शर्ट यू नीड वन सुइंग मशीन एंड टू टेलर्स. To produce one unit of output, you require one unit of capital and two units of labor. Right? This is known as fixed production function. To produce one more shirt, अगर आपको दो shirts produce करने हैं अभी, तो आपको क्या लगने वाला है? 4 units of labor and 2 units of capital. That is 4 tailors and 2 sewing machines. Right? This is known as fixed proportion production function. Right? So यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. सब्स्टिट्यूट पता है हमको क्या है? फुटबॉल फील्ड पे एक प्लेयर बाहर आया, दूसरा प्लेयर अंदर जाता है, मैच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, मैच अपना चलता ही रहता है. दैट इज सब्स्टिट्यूशन. सेम वे यहाँ पे आप सुइंग मशीन को लेबर से नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, टेलर से नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, ना ही आप टेलर्स को सुइंग मशीन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. फाइन. सो दैट इज नोन एज फिक्स्ड proportion production function. Let's look at the diagram. What is this? What does this mean? What is happening here? See, to produce one unit of output, आपको 2 units of capital and 3 units of labor चाहिए. राइट? तब आप one unit of output produce कर सकते हैं. यहाँ पे on x axis we have labor, on y axis we have capital. To produce one more unit of output, one more shirt, that is A2, आपको 4 units of capital and 6 units of labor की जरूरत है. Right? This is known as fixed production function. Right? So this gives you L-shaped curve. One. Second, this is the constant return to scale. And third, this type of production function is also known as Leontief isoquant or Leontief production function. Okay. Fixed proportion production function is illustrated by isoquant which are L-shaped or right-angled shape. Right? Second one देखिए, यहाँ पे जो constant return to scale, that is इतना इनपुट करोगे आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा. दैट इज कांस्टेंट रिटर्न. हमने 2 इनपुट किया, हमको 2 ही आउटपुट मिलेगा, हमको 4 आउटपुट नहीं मिलने वाले. हमने 3 इनपुट किया, हमको उतना ही 3 ही आउटपुट मिलेगा. दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. Then the type of isoquant is also called as input-output isoquant or input-output function. Yes, ये जो input-output function है, this was given और इसका originator, इसको डेवलप किसने किया था? लियोनटिफ करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था. Hence, this type of production function is also known as Leontief production function or input-output production function. Variable production function. Yes, variable proportion production function. A given level of output can be produced by several alternative combination of factors of production, that is capital and labor. The factors can be combined from alternative combinations of labor and capital. Right? This is given by an isoquant. See, here what is happening? You can use any combination of labor and capital to produce your output. You can use 4 capital, 1 labor. You can use 4 labor, 1 capital. You can use 2 labor, 3 capital. Any combinations you can use to produce this output. This type of production function is known as variable production function. Right? Let's look at the diagram. See what is happening here? On x-axis we have units of capital, on y-axis we have units of labor. Right? You can use any amount of any type of combination. You can use 6 capital, 2 labor, or you can use 3 capital, 3 labor.
और ये जो लाइन है, yes, this is known as isoquant. Yes, this curve is known as isoquant. This is your this this is showing variable proportion production function. On this line, from this to this, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, all the points will produce 10,000 output. All the points on this particular isoquant will produce 10,000 units of output, right? Or 10,000 various combinations of labor and capital to produce 10,000 output. That is known as variable production function, right? So we can use, you can either increase capital, reduce labor, or we can reduce capital, increase labor to produce same amount of output. This is known as variable production function. तो एक तो हमने पढ़ा फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हमने पढ़ा वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. Short run is a period in which a firm can adjust production by changing variable factors such as raw material and labor, but cannot change fixed factors such as capital. So short run production function ऐसा है, basically it is a shorter time span when you can only change labor. Capital will be same. That is, your sewing machines are two. You only have two sewing machines. In a short run, you will not buy one more sewing machine. But here, what will you do is you will keep on adding labor to these sewing machines. Two sewing machines पे आप labor add करते जा रहे हैं. Here, one factor is changing, the other factor is constant. That is short run production function. Long run production function में क्या हो रहा है? Both the factors of production are variable. That is, you are changing labor as well as you are changing capital. You are employing more tailors as well as you are employing, you bought more sewing machine. Short run production function, one variable is constant, other variable is increasing. Long run production function, both the variables are increasing. Right? That is short run and long run production function. So short run production function. We know what is short run production function, right? Next, the level of production can be increased within a limit of existing plant capacity during a short run. So plant capacity आप नहीं increase करें, sewing machines नहीं ज़्यादा खरीद रहे, सिर्फ labor employ करते जा रहे. तो यहाँ पे आउटपुट एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज होगा, उसके आगे नहीं इंक्रीज होगा. The behavior of production in the short run, where the output can be increased by increasing one variable factor, keeping other factor fixed, is also called law of variable proportion. So when we study short run production function, उस लॉ को क्या कहना है हमको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यहाँ पे आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल इज फिक्स्ड, जिसकी वजह से आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, कैन इंक्रीज टिल वन सर्टेन लेवल. एंड सेकेंड वी आर सेइंग, व्हेन यू स्टडी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. This is important. You have to remember the name, law of variable proportion, because eventually we have to study law of variable proportion as well. So what is happening in long run production function? The long run production function shows that in a long run, the output can be increased by changing all the factors of production. Here, output increasing का कुछ limit नहीं है. यहाँ आप जितना इनपुट्स चेंज करोगे उतना आपके आउटपुट्स विल आल्सो इंक्रीज, राइट? Long run analysis of law of production is referred to as law of returns to scale. So whenever you study production function of long run, that will be called as law of returns to scale. When you study short run production function, उसको कहा जाएगा law of variable proportion. When you study long run production function, that will be called as law of return to scale. Now we have to study what are isoquants, right? हमको पढ़ाई करना है isoquants क्या है. So let's see. Isoquant shows
all those combinations of factors, inputs which produce the same level of output. And isoquant is also known as equal product curve or iso product curve. Iso means equal. Basically, what is the meaning of iso? It means equal, right? Isoquant matlab kya? You're producing equal quantity or you're producing same quantity using any variation of inputs, right? Here what is happening is you have n number of labor and n number of capital. You're using any combination of labor capital. You're using 1 labor 2 capital or you're using 5 labor 7 capital. ये कोई भी combination use करके you're producing same level of output. Yes, this concept is very close to indifference curve concept, right? But there we were studying about how much will person buy to satisfy his own want. Here we are studying how much a producer will produce to make profits. That is the major difference, right? That is known as isoquant. So we have to study certain types of isoquants, right? सबसे पहले देखिए linear isoquants, right? Linear equations पढ़ते हैं वैसे ही linear isoquants. The isoquant would be straight line, which this type assumes perfect substitutability of factors of production, right? Meaning what is happening here? Labor and capital are perfect substitutes of each other. Let's look at the diagram here. इसको कहते हैं हम linear isoquant. यहाँ पे क्या कह रहा है? I will use labor and capital are perfect substitutes of each other. I will use 6 labor, 1 capital, or I will use 6 labor, 1 capital. Yes, this will give us a straight line, linear isoquant. This is very unrealistic. Why? Because capital and labor cannot be perfect substitutes of each other. But still, whenever two inputs are perfect substitutes of each other, we get a isoquant, which is a linear isoquant. Right? Next slide, देखिए. Right-angled isoquant. This assumes zero substitutability of factors of production, right? यहाँ पे substitute is not possible. You cannot substitute labor for capital, nor you can substitute capital for labor. These two are complementary goods of each other. When two inputs are complementary of each other, हमको जो isoquant मिलता है, we call that isoquant as right-angled isoquant. This Q, can you see this right-angled isoquant? L-shaped isoquant is known as right-angled isoquant, where capital and labor are perfect substitutes of each other. Correct? So, such type of isoquant is also known as input-output isoquant or also known as Leontief isoquant, named after Leontief, who studied about such isoquants. Next one is kinked isoquant. Thus, isoquant assumes only limited substitutability of capital and labor. There are only few process of producing any commodity. Means, देखिए, किंग isoquant मतलब लेबर और कैपिटल में बहुत थोड़ी marginal substitutability है. They are not perfect substitutes of each other. अगर perfect substitutes होते तो हमको एक linear isoquant मिलता. But here what is happening? यहाँ पे हमारा isoquant is kinked. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे bend हुआ है, वापस यहाँ bend हुआ है, वापस यहाँ bend हुआ है, वापस यहाँ bend हुआ है. This is showing कि capital और labor में बहुत slight substitutability है. When capital and labor में थोड़ी सी substitutability possible है, then the isoquant will be kinked isoquant. Right? Next one देखिए, last type of this, smooth convex isoquant. This is the most common example. जितने भी आपके पास production आप firms में, industry में करते हैं, this is the example of that. Yes, smooth convex isoquant.
This isoquant assumes continuous substitutability of capital and labor over a certain range beyond which the factors cannot substitute each other. Meaning, here you can use n number of various possibilities of factor of both the factors, that is labor and capital. Yes, n number of combinations use करके you can produce this production. This AB is your isoquant, which is smooth convex isoquant, right? Okay, so there are four types of isoquant which we studied: linear, kinked, right angle, and smooth isoquant, right? So we started studying about isoquants. We'll go ahead with this same topic, that is isoquants. So isoquants, as we already have established, that iso means equal and quants means quantity. So any point of this isoquant curve, एक लाइन पे मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली अगर आप बोलेंगे तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, राइट? तो आइसोकॉन का मतलब क्या है? ये जो इनफाइनाइट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? और ये इनफाइनाइट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास इनपुट के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है. इनपुट दैट इज लेबर एंड कैपिटल. लेबर और कैपिटल के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस यूज करके you can produce infinite possibilities, but the output is equal. Output is going to be same. आप कोई भी combination use करो, आपका output वही होने वाला है. So now we are going to study, moving ahead, derivation of smooth convex isoquant. Yes, तो isoquant जो है वो एक smooth convex curve किस तरह से बनता है? तो देखिए, it is assumed that each of the different combinations of labor and capital shown in the table, combinations are such that if one factor is increased, the other factor is decreased. All these factors are technically efficient. Now let's see the table, we will get a proper idea. See, this is the table which we are looking at. तो यहाँ पे आपके पास A, B, C and D ऐसे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. ये चारों भी ऑप्शंस यूज करके आपका जो आउटपुट होने वाला है, yes, it's going to be 20 units of output. ये हमने लिखा है, देखिए, various combinations of labor and capital to produce 20 units of output. ये कोई भी आप कॉम्बिनेशन यूज करो, वन आपके पास 4 प्रोडक्शन ऑप्शन है, A, B, C and D. कोई भी ऑप्शन यूज करो, आपका आउटपुट कितना होने वाला है? 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. सो हियर इन फर्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन A में यू विल यूज 1 लेबर एंड 15 कैपिटल. कॉम्बिनेशन B में और ऑप्शन B में वी विल यूज 2 लेबर. यहाँ हमने लेबर इंक्रीज किया है. जैसे ही हमने लेबर इंक्रीज किया, हमको कैपिटल रिड्यूस करना पड़ा है. क्यों? बिकॉज यू हैव फिक्स अमाउंट ऑफ मनी विथ यू. अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होता तो आप लेबर कैपिटल बढ़ाते जाते, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोन विच यू हैव टेकन फ्रॉम द बैंक, and using this fixed amount of labor, you can amount of money, you can either buy labor or buy capital, and you have to buy various combinations of labor and capital to produce same amount of output, that is 20 units. So combination B is saying 2 units of labor करो और capital reduce करो by 11, right? C is saying, option C is labor 3 units आपने increase किया, whereas capital को आपने 8 units से आपने 8 units capital use किया है. Option D is saying आपने labor और increase किया है 4 units, और यहाँ पे आपने capital जो है अगर देखोगे तो आपने capital को 2 units से और कम किया है, right? So meaning here you are just using 4 units of capital. Here if you see in labor, you are going on increasing 1 unit of labor, और capital अगर आप देखेंगे you are going on reducing capital. Okay, so
ये अगर आप फॉर्मूला diagrammatically देखना चाहो, you will get a diagram which will give you Q, that is your isoquant. This convex smooth line is nothing but the isoquant Q, which is producing you 20 units of output. इस लाइन पे कहीं भी आपको 20 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलने वाला है, राइट? सो ऑप्शन ए देखिए, it has some 15 units of capital and 1 unit of labor. Option B देखिए, 11 unit of capital, 2 unit of labor. Option C देखिए, 8 unit of capital, 3 unit of labor. Option D देखिए, 6 unit of capital and 4 unit of labor. वहाँ A, B, C, D ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए. जब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमको एक कर्व मिलेगा. This will be a smooth convex curve, convex to the origin. This is origin. इस origin को एक convex curve मिलेगा, which is called as isoquant, right? इस convex curve का सबसे important feature is इस convex curve पे कहीं भी you are producing 20 units of output, or you're producing equal output on any point given on this convex curve. Now, what is ISOQUANT map? Let's see. An ISOQUANT map enables us not only to measure the physical quantity of output, but also to compare the size of output between the various isoquants. Simple चीज़ है. What is ISOQUANT map? Look at Q1. This is ISOQUANT 1, Q2 ISOQUANT 2, and Q3 ISOQUANT 3. What are these telling us? ISOQUANT 1 पे on any point of ISOQUANT 1 you will produce 20 units of output. On ISOQUANT 2 you will produce 40 units of output, and on ISOQUANT 3 you will produce 60 units of output. मतलब origin के सबसे पास जो isoquant है it is producing minimum output, और origin के दूर जो output जो isoquant है that is producing maximum output, right? So in one diagram when you have various production possibility, right? Various production possibility से एक isoquant बना producing 20, वैसे ही 40 यूनिट्स, वैसे ही 60 यूनिट्स, वैसे ही आगे 80 यूनिट्स भी बन सकता है, 100 यूनिट्स भी बन सकता है. So in one diagram when I draw 2-3 isoquants we call this as isoquant map, right? जब एक ही isoquant है it is one isoquant producing equal units, equal amount of output on every point, right? यहाँ पे देखिए ये तीनों आइसोक्वांट्स अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक आइसोक्वांट पे 20 यूनिट्स ही बनेगा, दूसरे आइसोक्वांट पे 40 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होगा, और तीसरे आइसोक्वांट पे 60 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होगा. यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल यू आर प्रोड्यूसिंग 20, 40 or 60 units of output. This diagram will be called as isoquant map. Correct? Are you following this much? Let's look at the next one. Now we will study what are the characteristics or properties of isoquants. Yes, isoquants के properties हमको study करने हैं. There are some 4 properties of isoquants. First one, isoquants are negatively sloped. Second, a higher represented a larger output. Third, no two isoquants intersect or touch each other. 3, isoquants are convex to the origin. Let's study them in detail. सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट है, आइसोक्वांट स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट. सिंपल चीज है, देखिए. व्हाई इज दिस नॉट पॉजिटिवली स्लोपिंग, व्हाई इज दिस नेगेटिवली स्लोपिंग? अगर ये पॉजिटिवली स्लोपिंग होता उसका मतलब क्या है? कंटिन्यूसली यू आर इंक्रीजिंग लेबर and you are increasing output. You are increasing labor and you are increasing output. Are we doing that? No, because we do not have infinite amount of money. Money is the main constraint we have here. Money which is used to hire labor and to buy capital, to buy machinery. Correct? So that is money is the major constraint we have. So अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो इधर हम एक कैपिटल
2 लेबर खरीद सकते हैं, या हम 2 कैपिटल 1 लेबर खरीद सकते हैं। करेक्ट। मनी कंस्ट्रेंट के वजह से द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड labor is downward sloping. Either you can buy more labor, less capital, or you can buy less capital, more labor. That is the reason why we have downward sloping isoquant, or we can also call this as negatively sloping isoquant, right? So in order to keep the output constant, when the amount of one factor is increased, the quantity of other factor must be reduced. Another reason for this is, if I basic our formula or basic concept of isoquant क्या कहता है, ये देखिए ए बी, ये जो isoquant है, इस isoquant पे हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अगर यही isoquant अगर अपवर्ड स्लोपिंग होता, मीनिंग व्हाट, वन isoquant पे यू आर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, आगे जैसे ही आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे, यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑन द सेम आइसोक्वांट, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट ही गलत हो रहा है। So because of that, this isoquant says that you are producing equal amount of output on every point of this isoquant. Hence, this isoquant is always downward sloping. अगर कोई भी आइसोक्वांट इज अपवर्ड स्लोपिंग, उसका मीनिंग क्या है, इट इज नॉट एन आइसोक्वांट, ये इनकरेक्ट है। हमारा आइसोक्वांट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, isoquants are convex to the origin. Now, why are they convex to the origin? See, one, when you are increasing one commodity, you are reducing on the other commodity. You are employing more and more output, more and more number of labor in your firm when you are reducing capital, right? So capital, the जो reduction है, this reduction can be done in increasing rate, decreasing rate, or diminishing rate, or constant rate, right? Meaning what? See, decreasing rate, so पहले 10 था, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, यहाँ पे हम 2 से कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अगर आइसोक्वांट, अगर आपका कैपिटल इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, देन यू विल गेट अ लीनियर आइसोक्वांट, राइट, अ स्ट्रेट लाइन लीनियर आइसोक्वांट। अनदर एग्जांपल, यू आर डिक्रीजिंग, पहले 10 था, कैपिटल यूज्ड वाज अर्लियर 10, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, राइट, और फिर 4 हो गया, पहले 1 से कम हो गया, फिर 2 से कम हुआ, फिर 3 से कम हुआ। कैन यू सी दिस नंबर, दिस गैप इज इंक्रीजिंग, राइट? सो व्हेन द कैपिटल इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो हमको किस तरह का आइसोक्वांट मिलेगा, हमको कॉन्केव टू द ओरिजिन आइसोक्वांट मिलेगा। But in this situation, what are we doing? We are decreasing at decreasing rate. Meaning, पहले 10 था, earlier we were using 10 units of capital. Now we are using, say, 5 units of capital. 4 से कम हो गया. Then we are using 3 units of capital. 2 से कम हो गया. Then we are using 2 units of capital, 1 से कम हो गया, तो पहले 5 से कम हुआ, फिर 2 से कम हुआ, फिर 1 से कम हुआ। You are decreasing. In all the 3 situations, we were decreasing, but in this particular situation, we are decreasing at decreasing or diminishing rate. We can decrease at constant rate, we can decrease at increasing rate, or we can decrease at diminishing rate. When we are decreasing at diminishing rate, the isoquant will be convex to the origin, right? अगर increasing rate पे होता, ये जो decrease हो रहा है, अगर वो increasing rate पे होता, तो isoquant would have been concave to the origin. See, at any point of an isoquant is negative.
its numerical value measures the marginal rate of technical substitution between labor to the capital. Another reason for the convex isoquant is the technical substitution between labor and capital is negative, right? Marginal rate of technical substitution, that is MRTS, marginal rate of technical substitution between labor and capital is negative, जिसके वजह से the isoquant is convex to the origin. Right? This is the second characteristic or property of isoquant. Third property of isoquant. Isoquant do not intersect each other. Simple चीज है. Two isoquants are there. Both the isoquants are producing. One isoquant is producing 30 units. The other isoquant is producing 40 units. So ये 30 units and 40 units cannot intersect each other. Why? Because we all know कि एक isoquant पे all the points will produce 30 units. तो दूसरे isoquant पे all the points will produce 40 units. Look at this diagram. Let's see this Q isoquant is producing 40 units and Q dash is producing 30 units. If they intersect each other, meaning क्या होगा? At one point where they intersect each other, at that point they are producing same number of units, which is not true, right? Hence we say two isoquants when you draw isoquant map. Yes, when you draw isoquant map, two isoquants will never intersect each other. Reason being simple है. One isoquant produces 30, the other isoquant produces 40. If they intersect, उसका मतलब है जहाँ उनका intersection हो रहा है, on that point of time they are producing same. So how much is it? Is it 40 or 30? तो आपका पूरा आइसोकॉन का कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है. इसलिए टू आइसोकॉन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फोर्थ, आइसोकॉन कैन नॉट टच ईदर एक्सिस. सी हियर Q is touching y axis, Q dash is touching x axis, meaning at this point you need zero amount of labor and this much amount of capital, say 10 capital and 0 labor. Whereas Q dash is touching x axis, means at this particular point you need 0 capital and 10 labor, which is not possible. सिर्फ capital से can you produce? No. सिर्फ labor से can you produce? No. So for production you need both the units, both the inputs, labor as well as capital, right? Hence two isoquants will never touch either axis. दोनों में से x या y axis में से किसी भी axis को isoquant touch नहीं करेगा. So this is incorrect. ये नहीं होगा. They will not touch either isoquant. Okay. These are the 4 properties or characteristics of isoquants. Next one. Produces equilibrium or optimal combination of input or least cost factor combination. अभी हमको फाइंड आउट करना है प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम कौन सा होगा. देखिए प्रोड्यूसर के पास इनफाइनाइट, कंसिडरिंग isoquants, प्रोड्यूसर के पास इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल. उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल जहाँ पे वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस कर सकता है. ही कैन यूज 2 लेबर 4 कैपिटल, ही कैन यूज 5 लेबर 2 कैपिटल, राइट? हजारों कॉम्बिनेशन इसके पास अवेलेबल है. बट द क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर. इतने हजार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल होगा वो ढूंढना है. दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इक्विलिब्रियम इज अमाउंट व्हिच इज beneficial for producers as well as consumer as well as market and all the factors of production. सबके लिए ये जो equilibrium point है is beneficial for all of them, right? The firm can maximize its profit either by maximizing the level of output for a given cost
or by minimizing the cost of producing given output. In either case, the factor will have to be employed in optimal combination at which the cost of production will be minimum. सिंपल है टू मेक प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर दो चीज कर सकता है क्या दो चीज कर सकता है इधर ही कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट जितना आउटपुट हो सके उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है और व्हाट ही कैन डू ही कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हिज आउटपुट दो ऑप्शंस है टू मेक प्रॉफिट फॉर एनी प्रोड्यूसर टू मेक प्रॉफिट ही हैज टू ऑप्शन वन प्रोड्यूस मैक्सिमम जितना फर्म कैपेसिटी है उतना मैक्सिमम प्रोड्यूस करो मार्केट में सेल करो तुमको प्रॉफिट मिलेगा अदर ऑप्शन जो कॉस्ट है तुम्हारे पास राइट एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको 10 रुपीज लग रहा था डू समथिंग जिससे ये एक कमोडिटी 9 रुपए में प्रोड्यूस करेक्ट दिस इज अनदर ऑप्शन सो यूजिंग दिस और दैट ऑप्शन प्रोड्यूसर कैन मेक प्रॉफिट There are two ways to determine the least cost combination of factors to produce given output. Now see. Producing maximum output is not a feasible option for producer. If producer wants to make profit, what he will do is he will reduce the cost. कॉस्ट जितना हो सके उतना कम करना है कॉस्ट कम करने से हम उसको इन जनरल टर्म्स कॉस्ट कटिंग भी कहते हैं देखिए बहुत फॉर्म में ये टर्म यूज होता है कॉस्ट कटिंग करना व्हाट इज कॉस्ट कटिंग दे आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट जिससे उनको प्रॉफिट हो तो कॉस्ट रिडक्शन इज अ बेटर वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बेटर वे ऑफ रनिंग एनी फर्म so to do that we have to consider two options there are two types देखिए one is finding the total cost of factor combination and second one is geometrical method Okay, well, first we will study finding the total cost of factor combination. So see what is happening here. To produce six units, to produce 6 units, labor और capital दोनों भी use करना पड़ रहा है. For this producer, ये producer produce कर रहा है shirts. उसको produce करने हैं 6 units. Fine. तो प्रोड्यूस 6 यूनिट्स उसको लेबर और कैपिटल दोनों भी यूज करना पड़ा यहाँ पे देखिए लेबर का कॉस्ट इज यहाँ पे देखिए लेबर का कॉस्ट इज 6 रुपीज एंड कैपिटल का कॉस्ट इज लेबर का कॉस्ट इज 5 रुपीज एंड कैपिटल का कॉस्ट इज 4 रुपीज लेबर का कॉस्ट इज 5 रुपीज एंड कैपिटल का कॉस्ट इज I'm sorry, let's just start this again. Here, producer is trying to produce 6 units of output. Fine. उसके पास A and B ये दो ऑप्शन अवेलेबल है. ऑप्शन A उसको 700 रुपीज में मिलेगा. ऑप्शन B उसको 6,600 रुपीज में मिलेगा. Meaning to produce 6 units using option A और technique A उसको 7,000 रुपए लगने वाले हैं. To produce 6 units producing option B उसको 6,600 रुपये लगने वाले हैं. Obviously which option will he choose? He will choose option B which is feasible for him, which is lesser cost. Right? यहाँ पे वो 400 रुपया सेव कर रहा है. Why is this lesser than the earlier option C here? Here आपको कहा जाएगा कैपिटल का कॉस्ट इज एक कैपिटल का कॉस्ट इज 500 रुपया और एक लेबर का सैलरी इज 400 रुपीज. So meaning what? For this producer, labor is a cheap input, capital is a costly input. लेबर 400 रुपए में है और कैपिटल 500 रुपीज में है राइट सो ही विल यूज अ कॉम्बिनेशन वेयर लेबर इज मोर एंड कैपिटल इज लेस. ऑप्शन ए में देखिए ऑप्शन ए से 6 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर.
Option B is saying use only 2 units of capital, which is a expensive input, and use 14 units of labor, which is a cheap input, right? So for option B देखिए 2 into 500 1000 रुपीज, लेबर का कॉस्ट कितना होगा 14 into 400 5600 रुपीज, 1000 rupees plus 5600 rupees will give you 1600 rupees, right? This is a feasible, or this is a cheaper option available for this producer. In short, if you have two factor inputs, one is labor and one is capital. If labor is cheaper, use labor intensive technique, and if capital is cheaper, use capital intensive technique. In a country like India where labor abundantly available है, right? What we will do, we will use labor intensive techniques, जिससे हमारा cost of production कम हो जाएगा. Country like यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे लेबर कम अवेलेबल है बट कैपिटल चीपली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, दे विल यूज मोर ऑफ मशीनरीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज हायरिंग लेबर इज एक्सपेंसिव फॉर देम. फॉर अस हायरिंग मशीनरी और बाइंग मशीनरी इज एक्सपेंसिव, करेक्ट? सो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे क्या करें, कॉस्ट, आप ऑप्टिमम कॉस्ट या कॉस्ट रिड्यूस किस तरह से करोगे, you have to study your factors, that is your inputs. अगर labor cheap है, use labor intensive techniques, that is use more of labor in the production. अगर capital सस्ता है, capital cheap है, use more of capital in the production. capital का ज़्यादा use कीजिए, right? So having this equation, we can find out which combination should a producer use to minimize his cost, right? This is one way of finding कौन सा combination use कर. Now let's see the second combination or the second type which producer can use to come up with a cost cutting method or cost minimizing method. See, this method is called geometric method, right? यहाँ पे हम लोग ISOQUANTS और ISOQOST line, मैंने क्या कहा, ISOQUANT map और ISOQOST line दोनों को use करेंगे, and we will come up with the solution. We will tell producer produce here at this particular point using X amount of capital and Y amount of labor. This point will be cost effective point. यहाँ पे cost will be minimum to produce this amount of output, right? Earlier method was equation आपने किया, mathematics किया, plus किया, addition किया और आपको मिला कि this is the correct point. यहाँ पे we will use ISOQUANT map and ISOQOST line. So ISOQUANT map shows all the possible combinations of labor and capital that can produce different level of output, right? ISOQUANT map, you all know in one diagram जब आप 2, 3 या 4 ISOQUANTs बनाएंगे, that diagram will be called as ISOQUANT map, right? So this ISOQUANT map is telling Q1 will produce 200, Q2 will produce 300 output, Q3 will produce 400 output, right? Here change in capital by change in labor equal to marginal rate of substitution of labor and capital, which is equal to marginal product of labor divided by marginal product of capital. MP is marginal product of labor divided by marginal product of capital, right? Now, what is ISOQOST line? Simple चीज है, I have 100 rupees with me, right? My money जो मैंने बैंक से लोन लिया है to start शर्ट का प्रोडक्शन 100 rupees, right? In this 100 rupees मैंने देखा
कैपिटल का कॉस्ट इज 10 रुपीज 1 कैपिटल, फाइन, और लेबर का कॉस्ट इज 5 रुपीज पर लेबर. So using this 100 rupees मैंने क्या किया, I bought 5 unit of capital, right? 5 into 10 that is 50 rupees गए यहाँ पे, and I bought 20 units of labor. 20 into 5 because 5 was the cost of labor, that is 50 rupees equals to 100. तो मैंने हायर क्या किया, मैंने हायर किया है 5 units of capital and 20 units of labor, जिससे मुझे एक आइसो कॉस्ट लाइन मिला है. ये आइसो कॉस्ट लाइन क्या बोलता है कि आई कैन बाय हाउ मच x amount of capital and I can buy y amount of labor, right? This line is nothing but your budget constraint line. Yes, this is the money which you have. ये मनी से आप इतना कैपिटल खरीद सकते हो और इतना लेबर खरीद सकते हो. So isocost line shows various combinations of labor and capital that the firm could buy for a given amount of money at a given factor price. So isocost line AB क्या बताता है, we can buy O A amount of capital and O B amount of labor और हमारा पैसा खत्म, राइट? इससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते. आपने और थोड़ा लोन लिया, so you will come on A1 B1 line where you can buy OA1 amount of capital and OB1 amount of labor. That's it. That is your money which you have. वो मनी से आप इतना कैपिटल और इतना लेबर अफोर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. आपने और थोड़ा लोन लिया तो you move further ahead, further away from the origin. Now you can afford OA2 amount of capital and OB2 amount of labor. This is known as ISO cost line. This will tell you आपका मनी में आपके पास जितना पैसा है उस पैसे से आप कितना कैपिटल के यूनिट्स एंड कितने लेबर के यूनिट्स अफोर्ड कर सकते हैं. Now see, slope of ISOQUANT line. Given the monetary resources, if the factor prices change, the slope of ISOQUANT line will also change. So, see, we are here. Initially, we were at AC. This was our original AC. This is our original ISO cost line. अगर लेबर सस्ता हो गया, अगर लेबर सस्ता हो गया, we can buy more labor in the same amount of money. So ISO cost line will shift ahead. ये A point उधर ही रहेगा because capital में तो कोई change नहीं हुआ. Now you can afford AC1 amount of labor. You are at point C. AC is your original ISO cost line. अगर लेबर महंगा हो गया, लेबर एक्सपेंसिव हो गया, then you have to reduce the amount of labor you have. आपको लेबर कम खरीदना पड़ेगा. So you will shift inward at C2. Earlier you could afford OC, now you can only afford OC2, right? So your new ISO cost line is AC2. Why only this points are moving? Because cost of labor has changed. अगर cost of capital change होगा तो ये A point B shift move होगा. The ISO cost line depends upon two factors: price of factors of production, amount of money which the firm can spend on the factor. So ISO cost line depends on two factors. एक तो लेबर का सैलरी कितना है और कैपिटल का खर्चा कितना है, कैपिटल हम कितना रुपीस में खरीद रहे हैं, राइट? एंड सेकेंड, हाउ मच आई वांट टू स्पेंड ऑन कैपिटल एंड हाउ मच आई वांट टू स्पेंड ऑन लेबर. मेरे पास एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, मेरे पास कितना पैसा है टू बाय कैपिटल एंड लेबर. ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आइसो कॉस्ट लाइन. सो वी नो व्हाट इज आइसो क्वांट, यस, एंड वी नो व्हाट इज आइसो कॉस्ट लाइन. नाउ सो देखिए, ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट क्या होने वाला है. द फर्म हैज टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट विद अ मिनिमम कॉस्ट.
We'll just go a little behind. See this ISO cost line अगर आप देखोगे AB is the ISO cost line. This is amount of money जिससे हम capital labor खरीदेंगे. Any point beyond AB is not possible for you because आपके पास उतना पैसा नहीं है. Any point below AB, right? AB कर्व के below जितना भी points है, इन points का meaning क्या है? You are spending less. आपके पास money to spend तो है, to produce तो है, पर you're not optimizing or not utilizing all your resources. Money is the resource which you have, right? If you're producing below AB line, उसका मतलब है कि आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज कर रहे हैं. AB के आगे, AB के बाहर जितने भी पॉइंट है इन दिस एरिया, उनका मतलब क्या है? वो पॉइंट पे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास उतना पैसा ही नहीं है. सो ऑन विच लाइन कैन यू प्रोड्यूस? यू कैन प्रोड्यूस एनीवेयर ऑन A to B. ये जो लाइन है आइसो कॉस्ट लाइन है, इस लाइन पे ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. देन ओनली दैट प्रोडक्शन विल बी ऑप्टिमम. दिस इज द कैपेसिटी विच यू हैव, राइट? उससे कम स्पेंड करोगे, यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज. उससे ज़्यादा स्पेंड तो आप कर ही नहीं सकते. सो सी, सो नाउ आइसो कॉस्ट लाइन AB, A1, B1 and A2, B2. You have 3 ISO cost line and one, you see this is your one ISOQUANT curve. Q is your ISOQUANT curve. So if you are on option AB, that is you are underutilizing your resources. If you are anywhere beyond this, you don't have that much of money, you don't have that much of resources to produce. So you can produce Q amount of output. You can produce Q amount of output, say that is 20 units. And your ISO cost line is A1, B1. This A1, B1, that is your ISO cost line and ISOQUANT are tangent, are touching each other only at one point, at point E. This point E is your equilibrium point. This point E is your equilibrium point, meaning producer should produce point E amount of output using OQ capital and OL labor. Right? See, यहाँ पे भी ISO cost line is cutting ISOQUANT line. But this is beyond our reach because we don't have that much of capital with us. Let's see the next one. So now we are looking at condition for equilibrium. यहाँ दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए. इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूसर ने, एंटरप्रेन्योर ने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, इसके लिए दो कंडीशंस अवेलेबल है. एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यस, टेंजेंसी मतलब क्या? वेयर बोथ द कर्व्स आर टचिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट. टेंजेंसी बाहर से, राइट? Tangency, that is at point E, the slope of ISO cost line is equal to the slope of ISOQUANT. This is the first condition for equilibrium. The second condition for equilibrium, देखिए, the ISOQUANT should be convex to the origin at point of equilibrium. So ISOQUANT convex to the origin होना चाहिए, one condition. And there has to be a tangency between two line curves, that is ISO cost line and ISOQUANT line. Only then we say that equilibrium is there, right? So at this tangency, at this point E, which is equilibrium, equilibrium is always denoted by E. At this equilibrium, ISO cost line equals to ISOQUANT line. That is slope of ISO cost line equals to slope of ISOQUANT line. So what is slope of ISO
quant line, that is marginal product of labor divided by marginal product of capital. This is equal to slope of isocost line, which is price of labor and product of capital. Right? So ultimately, marginal product of labor divided by marginal product of capital is equal to price of labor divided by product of capital. Right? This is your equilibrium condition. At this point of time, जब both slope of isoquant equals to slope of isocost, equilibrium exist होगा और इस point पे हमको production करना है. Next, optimum input combination for maximization of output. In this case, the firm has to maximize its output for the given cost, right? So, यहाँ पे क्या करना है, हमको cost already दिया हुआ है. AB is the cost which we have. Earlier क्या था, हमको minimum cost ढूंढना था, right? हमको cost cutting करना था. अभी हमको क्या करना है, हमको cost दिया हुआ है, उसमें हमको maximum output produce करना है. तो कितना, कहाँ produce करना चाहिए, ये question है, right? So again you have one ISO cost line AB. You can buy OA amount of capital and you can buy OB amount of labor. You have been given 3 ISOQUANTS, Q1, Q2, Q3. इसमें अगर आप Q2 देखोगे, it is tangent to AB cost line, ISO cost line. At point E will be the equilibrium. Point E will be your equilibrium. Why? Because your isoquant is tangent to isocost. This point, इस point पे क्या हो रहा है? Firm has to maximize the output for given cost. This is the given cost which you have, और इस given cost पे maximum output आपको E point में मिलेगा. See, यहाँ पे भी touch हो रहे दोनों at point S, but point S is lesser than point Q. Q1 पे 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं, Q2 पे 400 प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो if we are producing S, then we are on a lower isoquant, मतलब आप सिर्फ 200 प्रोड्यूस कर रहे हो. At point E आप 400 प्रोड्यूस कर रहे हैं. Hence you should be producing 400 on isoquant 2 at point E. Right? This is your equilibrium for this particular situation. The optimal combinations of input need for a firm to minimize the cost of producing the given level of output or to maximize the output for a given cost outlay is given at the tangency point of an isoquant and an isocost line. Output maximum करना है, tangency होना चाहिए. Cost reduce करना है, tangency होना चाहिए. So basically for equilibrium, there has to be a tangency between isocost line and isoquant line, right? Isocost और isoquant दोनों लाइन का tangency यूज करके आप equilibrium situation find out कर सकते हो. This equilibrium situation could be maximizing the output or reducing the cost. Now what is expansion path? Next is what is expansion path और scale line भी जिसको कहा जाता है. Given the factor prices, firm will change its factor combination as it expands its output in the long run. This is explained by given figure. See what has happened here. पहले हमारे पास कम पैसा था. A1, B1 was your cost line, iso cost line, right? जिसकी वजह से we were on Q1 isoquant. We were producing Q1. अभी हमने थोड़ा लोन लिया, हमारे पास प्रॉफिट हो गया, वो भी हमने प्रोडक्शन में डाला, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा है जिससे वी कैन अफोर्ड मोर कैपिटल एंड मोर लेबर. सो वी आर ऑन A2 B2 ISO cost line. Now we are on A2 B2 ISO cost line. On this line we can obviously produce more. तो हमारा isoquant शिफ्ट हो गया. देखिए पहले we were producing 200 on Q1. Now we can produce 400 on Q2. So from E1 हम आगे E2 पे.
हमारा फर्म और ग्रो हो गया, और पैसा आया हमारे पास, और प्रॉफिट आया, हमने और थोड़ा लोन लिया, अभी हमारे पास ज्यादा पैसा, नाउ वी कैन अफोर्ड O31 OB3, right? OA3 of capital and OB3 of labor. जैसे हमारे पास दोनों भी ज्यादा आ गया, we can produce more output, which is output Q3. यहाँ पे we can produce 800 units, right? So पहले हम E1 पे थे जहाँ पे हम सिर्फ 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर हम आ गए E2 पे जहाँ पे हम लोग 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हम आ गए E3 पे जहाँ हम 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. In a long run, what is happening in a long run? Slowly, your firm is increasing its output from E1 to E2 to E3. So from the origin, मैं एक रे निकालूंगी जो रे E1, E2, E3 को intersect करेगा. This ray OE is nothing but expansion path. Meaning, future में if I keep making profit, if I keep producing, my firm will grow on this path. Yes, 800 प्रोड्यूस किया, आगे 1000 प्रोड्यूस करेंगे, उसके आगे 1200 प्रोड्यूस करेंगे, एंड सो ऑन. यहाँ हम आगे ग्रो करेंगे. This is the expansion path in a long term for a firm. Fine? You understood what is expansion path, or also called as scale line. Expansion path is defined as locus of points of tangencies between isoquants and isocost line. We see E1, E2, E3, E4. इसको जब join करोगे हमको मिलेगा expansion path. It shows how a firm given a factor price will change the amount of two factors when it increases the scale of production. कैसे एक firm grow होगा ये हमको expansion path और scale line बताएगा. The rational entrepreneur will choose to produce at same point on the scale line when both factors are variable in long run. Yes, कोई भी rational consumer जो होगा, rational producer जो होगा, rational producer का aim क्या है? To make maximum profit. वो क्या करेगा? He will produce on the scale line. वो scale line से आगे बाहर नहीं जाए. जिस तरह से scale line जा रहा है उसी तरह से on the same scale line he will use same input combination of labor and capital and produce on the scale line which is profitable for his firm. Right? So with this we have finished theory of production. If you have any questions, please. Properties of isoquants, important. Then you have to study about the equilibrium condition for the firm when it has to reduce the cost, also when it has to increase the output. Yes, equilibrium can be achieved using two ways. One way is reducing the cost and the other way is by increasing the output or by producing maximum output. In both the ways आपको equilibrium condition is same, that is tangency between isocost and isoquant line. Right? Okay. Right? So जब स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करना है तभी से वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जब लार्ज स्केल में और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करना है बी से रिटर्न टू स्केल. ये दोनों लॉज पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड व्हाट इज लॉन्ग run production function. See, we have our next lecture where we will study law, variable proportions and return to scale on Friday 11th of December morning 10 a.m. to 11:30 a.m. Right? Friday the lecture will be at 10 a.m. and we will be studying the following chapter, that is law, variable proportion and return to scale. Thank you very much. Keep studying.